Am I audible? Is the screen visible to everyone? This call is now being recorded. Hello? Okay. Good morning, good morning. Yeah, so we'll wait for 1 or 2 minutes. Then we will start our lecture, okay? Okay, so good morning to all of you. Those who have joined, let's welcome you all. Those who are not able to join, kindly tell them if they are in group, so join it again, because some of these students are just rejected from joining of the information. So we will sorting out that one. Okay, so let me start with this particular PPT. I hope this PPT is going to visible to all of you. Okay. So we have already covered a basic introduction about the basic electronic subject. Am I audible first of all or not? Tell me. Somebody please open their mic and tell me. Am I audible properly? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So we have already discussed about the content topic and the stuff that we are going to discuss in this entire kind of the subject. And now I'm going to start with the chapter number 1. Okay, so that first chapter, which is regarding the atomic theory subject. That's our main topic of the discussion is going to be kind of the historical purview about the atomic theory. Okay, so the atomic theory and related to that, जो भी हम आज बात करने वाले हैं वो सभी चीजें आपको 8th 9th 10th और इन 11th 12th स्टैंडर्ड आपको ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन थोड़ा सा हिस्टोरिकल प्रीव्यू or some of the new things that we are going to understand today, how actually that atomic theory work and how it's going to be helpful for us. वो कैसे हम अपने रेगुलर मटेरियल साइंस में या कोई भी डिवाइस की प्रॉपर्टी हम जब हम डिसाइड करते हैं, so how we can decide from the atomic theory that all stuff that we are going to discuss in this lecture. तो वो सब चीजें हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं. So let me start with the stuff like और बीच में कभी भी किसी को कुछ डाउट हो, कुछ इश्यू है, तो वो अपना माइक ओपन करेगा और मुझे इंटरप्ट कीजिएगा. यू जस्ट ओपन योर माइक एंड आस्क मी द क्वेश्चन इन बिटवीन इफ यू नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग. अगर आपको कोई चीज पता नहीं चलती है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप माइक अपना ओपन करके मुझे बीच में पूछ सकते हैं कि सर ये फिर से समझाइए या ये चीज आपको पता नहीं चली. ठीक है. सो कौन से टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं? विच टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस? दैट हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक थियरी. व्हाट इज हिस्टोरिकल? बोलिए. चलिए सर, हमें ये सब नोट्स अभी करना पड़ता है या फिर बाद में करें तो?
बाद में करे तो चलेगा, ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी है तो इट्स वन टाइप ऑफ द वीडियो नोट्स। ओके, तो आप ये कभी भी देख सकते हो। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज ये वीडियो लेक्चर तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा ही, तो वो लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। सो इट्स डिपेंड अपॉन यू, अगर आपको करना है कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स नॉट नीडेड। ओके, और ये नोट्स कोई भी आप कर रहे हो तो वो मैं कहीं पे एज अ सबमिशन नहीं मांगने वाला हूँ। जो भी पोर्टल है हमारा कैनवास में, वही सबमिशन का सब क्राइटेरिया होगा। इसके अलावा और कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा ऐसा नोट्स या रेगुलर नोट्स ऐसा कुछ सबमिट नहीं करना है, ठीक है। इसलिए ये सब हमें कैनवास पे मिल जाएगा। यस यस, दैट वीडियो रिकॉर्डिंग एंड ऑल स्टफ आप कैनवास पे, और यूट्यूब जो लिंक हम बनाएंगे हाँ वो यूट्यूब लिंक, ये सब वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होंगे वहां पे, ठीक है। तो आप कभी भी देख ठीक है। सकते हो यूट्यूब। ओके ठीक है। ओके। सो क्या हम डिस्कस करने वाले हैं ये पूरे चैप्टर में? सो हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक थियरी, बोर्स एटॉमिक मॉडल, which is mostly accepted in kind of the all the kind of the scientists and among all the categories. So that we are going to discuss in this particular lecture. So let's start with the basic history. ये थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन ये सब चीजें आपको समझना जरूरी है कि भाई जो भी हम अभी बोर्स मॉडल और जो भी एटॉमिक थियरी और जो भी हम कह सकते हैं like stuff which is defined in periodic table, आप सबको periodic table पता होगा, आपके केमिस्ट्री में फिजिक्स में ये सब चीजें आती है। तो वो एटॉमिक मॉडल के हिसाब से वो पीरियोडिक टेबल कैसे बना, वो हम लास्ट में यहाँ पे ये पूरा लेक्चर खत्म होने के बाद हम देखेंगे। सो हाउ इट्स इम्पोर्टेंट टू अस एंड हाउ इट विल केम। सर वॉइस क्लियर नहीं है। हेलो, इज इट क्लियर नाउ? हेलो, जस्ट गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। किसी और को भी ये तकलीफ है तो प्लीज बताइए, इज दैट वॉइस इज नॉट कमिंग प्रॉपरली? यस सर सर, वॉइस क्लियर प्रॉब्लम नहीं है। आ रहा है। Okay, एक मिनट, let me just put my headphone so it would be a better. Give me a second. Yes, is it okay now, everyone? यस सर। Okay, now it is perfectly okay. Yes, so हम क्या पहले डिस्कस करने वाले थे भाई, हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक थियरी। तो ये जो भी एटम्स हम देख रहे हैं कि भाई एटम ऐसा होता है, उसमें न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब चीजें होती है। लेकिन ये पता कब चला कि भाई ये सब चीजें एटम के अंदर होनी चाहिए? कोई थियरी थी या कौन से साइंटिस्ट ने ये सब चीजें बताई, और उसको यूज करके, एटॉमिक थियरी को यूज करके किस तरह से हम मटेरियल क्लासिफाई कर रहे हैं और कौन से मटेरियल हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज हो रहे हैं। बट ये सब चीजें पता चली स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी काइंड ऑफ द अर्ली स्टेज, स्टार्टिंग फ्रॉम डेमोक्रिटस। ओके, ये फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने वर्ड यूज किया एटम। ओके, और उसने वो एटम को क्या बताया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटम? ही हैज सेड इट्स इनडिविजिबल, मतलब कि कोई ऐसा एटम जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। ओके, so that is considered as a atomic theory exactly in 400 BC. okay, like वो भी all matter, जितने भी मटेरियल है, जो भी मैटर है, इट्स कंसिस्ट इनविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। मतलब कि ऐसे वो पार्टिकल अपने अंदर छुपाए रखे हैं जो आप देख नहीं सकते हो, लेकिन सब चीजें एटम से बनी होती है, और उस वो छोटे से छोटे एटम को आप काट नहीं सकते हो। यू कैन नॉट डिवाइड, यू कैन नॉट ब्रेक इट। So we can say atoms are indestructible. Atoms are solid, but you cannot see in kind of your real eyes. Okay, so it's invisible. Atoms is going to be homogeneous, as well as atom is having kind of the different size, different शेप। रियल के लिए वो साइज, शेप, मास, पोजीशन सब अलग अलग होती है ये डिफरेंट एटम्स की। बट एटम जो आप डायरेक्टली आई से नहीं देख सकते हो, ये कुछ ऐसी थियरी। ओके, इट्स गिवन बाय दिस पर्सन, मिस्टर डी। आफ्टर दैट it's a come to the second scientist name is Aristotle. Aristotle has just kind of the give kind of the opposite theory. एरिस्टोटल ने क्या बोला कि भाई, एरिस्टोटल ने एटॉमिक थियरी में बिलीव नहीं किया, बट उसने क्या बताया कि भाई जो भी कोई भी मटेरियल है, कोई भी मटेरियल वो चार चीजों से बना होता है, आइदर एयर, फायर, अर्थ एंड वाटर। ओके, so what Aristotle says that all materials are in the earth
which is not made up of atom, but it is atom, it's made up of the element. So it's an element theory. So this Aristotle theory is given kind of the fire, earth, water and air, which is give the intermediate stage also, like hot, dry, cold, wet. So we can say many more elements is going to be discovered by this one, like इसको हम hot material बोल सकते हैं, इसको dry material बोल सकते हैं, ये fire है, इसको हम air बोल सकते हैं. Likewise, there are a different element properties are there. Okay, but directly that Aristotle theory is not contributed to atomic theory, but it's contributed in different manner. Different manner it means ये जो state है, जो एलिमेंट स्टेट है, वो अलग अलग मटेरियल की प्रॉपर्टी को डिसाइड करने के लिए काम आएगा, बट डायरेक्टली नॉट टू द एटॉमिक थियरी बट टू देयर स्टेट, कि भाई ये मटेरियल है वो आइदर कम अंडर द विच कैटेगरी, ओके, लाइक कोल्ड कैटेगरी और एयर कैटेगरी और गैसियस कैटेगरी. तो ये थियरी उसकी प्रॉपर्टी में काम आएगी, दैट थियरी, बट नॉट डायरेक्टली टू द एटॉमिक थियरी, कि भाई एटम कोई मटेरियल के अंदर क्या होता है, एटॉमिक थियरी क्या होती है. इट्स नॉट डायरेक्टली कंट्रीब्यूटेड. आफ्टर दैट दिस थियरी इज नॉट गोइंग टू बी डायरेक्टली एक्सेप्टेड. After that, there is a theory which is given by John Dalton. Okay, so John Dalton ने क्या बताया कि भाई atom of some element are alike, but atoms of different element differ in mass, size and chemical property. तो इसने बताया कि भाई एटम कोई एलिमेंट है, लेकिन वो सबके लिए सेम नहीं है, सब मटेरियल्स के लिए वो एटम सेम नहीं होता, वो डिफर करता है. कौन कौन से पैरामीटर में, उसके मास में, साइज में, केमिकल प्रॉपर्टी में. और अगर ऐसी केमिकल कॉम्बिनेशन हम बनाए ऐसे दो और एटम में, तो इट विल क्रिएट अनदर टाइप ऑफ द मटेरियल. लाइक यू कैन से हाइड्रोजन and oxygen, if it is going to combine, it is make a water. So there are hydrogen elements are there, oxygen elements are there in different size and chemical property. If they are combined, it will make a water, like the ammonia, carbon dioxide. So we can say atom, individual hydrogen atom, oxygen atom cannot be destroyed or not created, but combination with the different atomic structure, the combination with the different materials atom, it will create a different material. हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करो वाटर मिलता है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन करो एमोनिया मिलता है. लाइकवाइज देयर आर केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट एटम्स, और उसको कंबाइन करके आप नया मटेरियल बना सकते हो. सो दिस इज अ थियरी इज गिवन बाय द जॉन डेल्टन. ओके, नेक्स्ट थियरी which is given by J.J. Thomson. Okay, J.J. Thomson is going to be mostly credited for the discovery of the electron and isotope. तो J.J. Thomson का एक्सपेरिमेंट क्या था? That experiment has is regarding to identify the behavior, or we can say regarding the type of the atoms available in one particular kind of the gas or in one particular material and like that. So J.J. Thomson ने क्या किया? Okay, first we will go with the stuff like it's his particular experiment. So J.J. Thomson ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि like एक कैथोड रखा, यहाँ पे एनोड रखा, यहाँ पे उसने कुछ रेज, ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ द रेज ही हैज स्टार्ट इंसर्टिंग. और वो रेज कैसे थे? रेज इज गोइंग टू बी लाइक लाइट रेज, एक्स रेज, बीटा रेज, गामा रेज. तो उसने क्या किया कि एक साइड से उसने ये डिफरेंट रेज को इंसर्ट करना चालू किया. तो ऑब्वियसली एक साइड एनोड है, एक साइड कैथोड है, तो पूरे जो भी रेज यहाँ पे इंसर्ट हो रहे वो पूरे के पूरे सब रेज यहाँ पे सामने एनोड पे जाने चाहिए. लेकिन यहाँ पे उसने नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट जैसे ही उसने रखी, तो क्या हुआ? दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ फ्लैट मूवमेंट, इट्स दैट मूवमेंट ऑफ दैट रेज इज गोइंग टू बी बेंडेड समहाउ. ओके, तो ये बेंड होने की वजह से उसको ये पता चला कि लाइक थॉमसन हैज स्टडीड अ पैसेज थ्रू अ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैस. इसके अंदर उसने गैस, एक पर्टिकुलर गैस थी, वो उसमें फील की, और वो गैस थी which is having kind of the neutral. सर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है. यस, अभी भी नहीं आ रहा है. हेलो, नाउ इज इट ओके? हेलो, हेलो. ओके ओके सर. ओके, यस, ओके. सो जो भी गैस उसने फील की वो ट्यूब में, वो ट्यूब थी वो न्यूट्रल थी. ओके, वो कुछ एक्साइटेड नहीं थी, पॉजिटिव नहीं थी, नेगेटिव, बट इट्स अ न्यूट्रल गैस इज देयर. लेकिन वो न्यूट्रल गैस में से ये एक्सरे पास किया जाए या लाइट पास की जाए, तो आइडियल कंडीशन क्या होनी चाहिए कि
वो सामने एनोड पे स्ट्राइक होना चाहिए, लेकिन जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट यहाँ पे इंसर्ट की, सो दैट फ्लो इज गोइंग टू बी मूव्ड एट वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, तो उसको ये पता चली कि भाई एज द करंट पासिस थ्रू द गैस इट गिव्स ऑफ द रेज ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो ये नेगेटिव चार्ज आया कहां से, क्यों? क्योंकि जो भी एटम्स सरप्राइज टू द थॉमसन बिकॉज एटम्स ऑफ द गैस वेर अनचार्ज। तो जो भी एटम्स थे गैस के अंदर वो तो अनचार्ज थे, फिर भी ये मूवमेंट क्यों आया? Okay, so that's Thomson has concluded that there is some negative charges available in the atoms. After that theory, he has given this particular model, like it's a model called as a plum pudding model. प्लम पडिंग मॉडल में क्या होता है कि उसमें ये बताया कि इसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। सो वी कैन से इट्स अ सी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, and inside of that there are some negative charges there, which is name is given by the J.J. Thomson as an electron. So atom contain a negatively charged article which is called as an electron, and there are a positive charge matter of that. ओके, तो इसमें दो तरह के चार्ज होते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का पूरा एक लाइक कुकीज यू कैन से। कुकीज हम कैसे बोलते हैं, लाइक कुकीज है और उसके बीच में जो चॉकलेट चिप्स है, यू कैन से दैट आर द इलेक्ट्रॉन्स आर देयर व्हिच इज जस्ट सिचुएटेड इन योर particular model. So this model is considered as a plum pudding model. Plum pudding model, it's initially it's given kind of the very credit to give a name as a electron कि भाई नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ इसमें है। ओके, बट ये जो मॉडल था लाइक कुकीज मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, इट्स नॉट गोइंग टू बी वर्क एनीमोर। व्हाई इट इज नॉट गोइंग टू बी वर्क एनीमोर? क्योंकि जे थॉमसन की थियरी के हिसाब से उसको ऐसा पता चला कि जब भी आप इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हो, जब भी आप आपके एटम को चार्ज करते हो, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, दैट इलेक्ट्रॉन इज नॉट गोइंग टू बी सस्टेन इन देयर ऑर्बिट, इट्स नॉट गोइंग टू बी सस्टेन in their particular position, or that entire atom is going to be unstable. ये क्या होता है हम मैं बाद में वीडियो बताऊंगा, उसको उसमें आपको एनिमेशन से एग्जैक्टली पता चल जाएगा। बट J.J. Thomson is credited for given name as an electron which is available in the atom. After that theory, next theory which is came by the Rutherford theory. Okay, so what Rutherford has said, like it's expected that alpha particle pass deflected through the atom. तो Rutherford ने क्या किया? Okay, so Rutherford ने, हम पहले उसके एक्सपेरिमेंट में जाते हैं कि what Rutherford has done the experiment. Rutherford ने ये बताया कि उसने अल्फा पार्टिकल विच इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल का उसने बम्बार्डिंग किया, किस पे? एक गोल्ड फॉइल पे। सो उसने पतली सी एक गोल्ड फॉइल ली, उसके ऊपर ये अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग किया, और उसने आजू बाजू सब जगह पे इट्स सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन दे हैव प्लेस्ड। ओके, मतलब कि वहां पे वो देख सके कि जो भी अल्फा पार्टिकल में इस पे स्ट्राइक कर रहा हूं, वेदर दैट अल्फा पार्टिकल डायरेक्टली पास थ्रू दिस seat or not, or it's going to be reflected back in any direction. Okay, so whatever the assumption has done through the Rutherford, it's done exactly same, like most of the particle pass straight through the undeflected. तो जो भी स्मॉलेस्ट अल्फा पार्टिकल थे वो स्लिट के आर पार चले गए, और दूसरी साइड यहाँ पे आपको उसका ऑब्जर्वेशन मिला कि भाई ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पे स्ट्राइक हो रहे हैं, लेकिन उसको कुछ पार्टिकल्स also get scattered from that gold slit. So scattered alpha particle here deflected. Okay, so उस ये एक्सपेरिमेंट के ऊपर से ये पता चला कि भाई ये स्मॉलेस्ट अल्फा पार्टिकल है जो कि डायरेक्टली सब पास ही हो जाने चाहिए थे, जो भी पार्टिकल थे वो सब फॉल में से पास ही हो जाने चाहिए थे, लेकिन कुछ पार्टिकल ऐसे भी है इसमें जो ये स्मॉल अल्फा पार्टिकल को पास नहीं होने दे रहे। ओके, which will make the deflected, which make the scattered of that particular rays of that alpha particle. तो ये थियरी के हिसाब से, ये एक्सपेरिमेंट के हिसाब से रूथरफोर्ड को क्या, is there any doubt, any question somebody want to ask or any? Okay, so ये एक्सपेरिमेंट के ऊपर से रूथरफोर्ड को क्या जानने को मिला? Like Rutherford has got the idea that it's deflected energetic alpha particle, the nucleus must be dense with positive charge.
तो उसको ये थियरी में से क्या पता चला कि ये अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्टेड हो रहे हैं, लाइकवाइज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर मॉडल। तो ये न्यूक्लियस विच इज मस्ट बी ए डेंस एंड इट्स अ पॉजिटिवली चार्ज, ड्यू टू दैट दिस अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्टेड बैक, okay, from this surface or from this particular atoms. So with that theory he has given the idea, or he has given the theory that the center or nucleus of the atoms, okay, the center or nucleus of the atom consists of positively charged, which is name is given as a proton. So proton कहां से आया कि भाई कोई center है जो कि पूरा dense है और वो positively charged है, जिसके हिसाब से ये alpha particles are reflected back. So from that theory first name proton is into the existence. प्लम पॉडिंग मॉडल था, उसमें इलेक्ट्रॉन मिला, यहां से क्या हमको जानने को मिला कि भाई प्रोटॉन है। तो कुछ पॉजिटिवली चार्ज है प्रोटॉन है जो कि डेंस है, और कुछ इलेक्ट्रॉन है जो ये वेव्स को डिफ्लेक्टेड करे। सो ये दोनों थियरी से अर्नेस्ट रूदरफोर्ड एंड दैट जे थॉमसन यू आर गेट द आइडिया अबाउट द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। आफ्टर दैट most kind of the such type of the model Rutherford has given like that. There are some plus charge nucleus are there and electrons are there, which is the surrounding to that one. After that, best theory has given by the Niels Bohr. Okay, there is one interesting thing over here that Niels Bohr is just a second, display all the stuff. Yes, so Niels Bohr is nothing but he's a student of that Ernest Rutherford, and Rutherford and Niels Bohr also got the Nobel Prize for. So this is a generation, like Guide is there, his student also got the Nobel Prize. After that, Heisenberg is there also, he has got the Nobel Prize. So there is a three generation is continuously getting Nobel Prize to getting this atomic theory and their kind of the findings of that. Okay, ये तीनों teachers, उसका student like सब Nobel Prize winner है. So what Niels Bohr has developed the very first successful model of the atoms. Like Niels Bohr ने क्या कहा कि like atom has a small positively charged nucleus surrounded by the electrons, and that surrounded by the electrons will travel in a circular orbit, okay, which around the nucleus, same like the planets surrounded the sun, around the sun. So जैसे सन के आजू बाजू जैसे हमारा अर्थ है वो रोटेट होता है, वो दूसरे planets रोटेट होते हैं, likewise there are a center which is having a protons positively charged, and उसके आजू बाजू जो इलेक्ट्रॉन है likewise it's going having a periodic rotation are there. This is the first model is there. So and after that what additional Niels Bohr has said, each orbit is associated with the definite amount of the energy. Okay, therefore it's called the energy level. मतलब के ये ऑर्बिट है, जो भी इलेक्ट्रॉन है वो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूम रहे हैं, लाइक फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट. व्हाई इट इज सो? बिकॉज हर एक इलेक्ट्रॉन की एक अलग अलग डेफिनेटिव एनर्जी स्टेट है. ओके, इसीलिए जो भी इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं, ओके, वो अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग एनर्जी लेवल के साथ घूम रहे हैं. सो वी कैन से देयर आर डिफरेंट ऑर्बिट्स आर देयर, लाइक फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, और वो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं. और अगर ये इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना है, ओके, सो उसको आइदर एनर्जी गेन करनी पड़ेगी और एनर्जी लूज करनी पड़ेगी. सो व्हाट इट सेज, लाइक इफ दैट इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन सेल टू द अनदर सेल, एंड आइदर इलेक्ट्रॉन नीड टू लूज द एनर्जी और नीड टू गेन द एनर्जी. So this is a statement they have given, like this is a positively charged, there are a nucleus are there around, the electron is rotating, then there is a number of different states are there, energy states are there, that cells are there in which there are a different energy state, and according to that entire structure is going to be worked. So what is it Niels Bohr says like that? This is a theory he has given. like आप ऐसा सोचिए कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है वो ये फर्स्ट ऑर्बिट में यहाँ पे घूम रहा है. ओके, यू कैन सी दिस इज यू कैन सी द डायग्राम ओवर हियर. सो दैट ग्रे रीजन वो उसका इलेक्ट्रॉन का एक पूरा ऑर्बिट है, वहां पे घूम रहा है. आप एक्सटर्नल कुछ एनर्जी दे रहे हो, और एनर्जी कैसे हम कैलकुलेट कर देंगे कि भाई प्लांक कांस्टेंट क्या है, उसका स्पीड ऑफ लाइट क्या है, और आप कौन सी वेवलेंथ का रेज उस एटम पे आप स्ट्राइक कर रहे हो. सो इट्स काइंड ऑफ द स्टफ लाइक प्लांक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट. आप ये इलेक्ट्रॉन पे कोई लाइट इंसर्ट कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, इट्स गेन द एनर्जी
and then it is jump from gray to the this blue. So अभी ये एनर्जी है यहाँ पे घूमना चालू हो गया. So we can say it's absorb the energy and jump to the higher orbit. Okay. As well as जब भी ये हायर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, अगर वो सेंटर में आता है, when it is jump back to the near orbit, जो न्यूक्लियस के नजदीक का ऑर्बिट है, अगर उसमें आता है हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, एट दैट टाइम इट विल स्टार्ट रेडिएटिंग द लाइट. तो यहाँ पे क्या हुआ कि आप एनर्जी दे रहे हो तो वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा और हायर ऑर्बिट में जंप करेगा. अगर हायर ऑर्बिट में से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो वो एनर्जी लूज करेगा. So and that this both stuff having kind of the relation of energy as a E equal to hc upon lambda. So Niels Bohr will also give the coupling with the Rutherford population, the Max Planck quantum theory also, and it's proposed the atom consists of positively charged nucleus of protons and neutrons surrounded by the negatively charged electrons traveling in discrete orbit at a fixed distance from the nucleus. तब ऐसा कह सकते हो कि जो भी ऑर्बिट है वो ऐसा फिक्स डिस्टेंस है और वो इलेक्ट्रॉन है वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर रहा है विद दैट स्पेसिफिक state of the energy state. So आप यहाँ पे देख सकते हो like greater the distance from nucleus, there are the we can say kind of the energy is also going to be less. Okay, so आप ये कह सकते हो कि ये fourth layer है, third layer है, second layer है, first layer है. So likewise जैसे जैसे distance बढ़ता जाता है, likewise there are a different orbit is going to be situated. Okay, but this theory also going to be challenged by the quantum theory. और जो हाइजनबर्ग ने जो भी थियरी इसको बताई, लाइक आप डायरेक्टली ऐसा नहीं कह सकते हो कि ये स्पेसिफिक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. इट कैन बी हैविंग अ रैंडम मोमेंट. ओके, सो इलेक्ट्रॉन हैज अ डिस्क्रीट or specific quantity of energy which is called as a quantum. Okay, so when electron move from one orbit to another orbit, the energy difference between two states can be lose or gain in form of single quantum radiant energy which is called as a photon. So photon की definition यहाँ पे ऐसी दी गई है, like अब कैसे कह सकते हो कि this is a photonic energy. Like this photonic energy it means जब एक स्टेट में से एक रेडिएटिंग ऑर्बिट से दूसरी रेडिएटिंग ऑर्बिट में जाता है उसके लिए जो भी एनर्जी चाहिए, that energy is contained by that particular kind of the quantity which is either losing during this moment. It's considered as a photon. अब बोलता हूं ना कि भाई फोटोनिक सर्किट जो लाइट एमिट करती है, लेकिन कैसे पता चलेगा ये कौन सा फोटोन है? डिपेंड अपॉन दैट वो कौन सी ऑर्बिट में से जंप कर रहा है एक से दूसरे में. लाइकवाइज यू कैन गेट द name which is as a photon, okay, which is related to the light, I can say. So this is a stuff over here as a different theory given by the Niels Bohr. How this Bohr atomic model, that in fact it is impossible to determine the exact location of the electron. The probable location on the electron is based on how much energy that electron has. तो आप डायरेक्टली तो ऐसा नहीं कर सकते कि भाई ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, बट वो कौन से स्टेट में है, how much energy they are consuming right now. According to that, that layer or that orbit that is going to be identified from the Bohr's model. और उसी हिसाब से एक न्यूक्लियस के आजू बाजू कितने इलेक्ट्रॉन है, कितनी ऑर्बिट है, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन गेट द आइडिया दैट इट इज कैटेगराइज्ड अंडर विच ग्रुप. ओके, सो एक एटम है उसके बाद एक ही इलेक्ट्रॉन है, सो दैट्स कंसीडर्ड एज अ hydrogen, then the helium, then lithium, carbon. So depend upon that orbital structure, that different material is going to be settled in the periodic table. Okay, depend upon that how much electrons are there in their particular orbit. Okay, so according to that modern atomic theory model, atom has a smaller positively charged nucleus surrounded by the larger region in which there are enough electron to make an atom neutral. So we can say उसके सेंटर में ऐसा स्पेसिफिकल पॉजिटिव चार्ज है जो कि पूरा स्ट्रक्चर को न्यूट्रल कर रहा है. किस हिसाब से कि जितने इलेक्ट्रॉन है उस हिसाब से मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज भी है. सो बोथ इज मेकिंग काइंड ऑफ द न्यूट्रल टू दैट. ओके, सो what is Bohr's atomic model over here? So for that, let me just show you the video over here. Let me just play the some video so you can get the idea, like what are the stuff we have. Yes.
So is that voice is coming or not, first of all? Can you clearly kind of hear this voice and this particular music? Just give me a feedback, somebody. Yes. Okay. Okay, and if you cannot hear, okay, just let me just give you the solution for that. What I will do, I will just give you the link, okay, through which you can also play this link in your kind of the YouTube. Then also you can get this idea over there. But whatever the stuff which is represent over here, जो भी चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई एनिमेशन वो आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि उसके हिसाब से हम अपना नेक्स्ट सेशन है वो स्टार्ट करने वाले. So just let me just give me a 1 minute, so I will give you the idea that what actually you need to see. Model. Okay, just a second. Let me just write this YouTube link in your चैट बॉक्स. ओके, सो चैट बॉक्स में भी आप प्ले कर सकते हो और मैं भी यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ, तो आप दोनों में से कोई भी देख सकते हो. ओके, बट यू नीड टू सी दैट एंटायर दिस 5 minute ऑफ दिस वीडियो सेशन. ओके, सो लेट वी विल सी.
Okay, so this is the video which is regarding the atomic model theory, and first I would like to ask: does anybody having any doubt in this theory or in this discussion that we have done so far? It's a very historical kind of the purview, and there are the stuff that we have discussed which is related to the atomic theory, how the different model came, and how the different scientist has given that theory and all stuff. Yes. So anybody having any specific doubt or any question like that somebody has not understood, or if your comment, like if something is missed, and if you want to add, so this is also the welcome. Okay, from my side. So you can please, if you want to add something, or if you want to add your thoughts, that's also the okay. Any doubt to anybody now? Okay, so this is a oral stuff that we have discussed so far about the atomic theory. Okay, what we are going to do as a next kind of the session, I'm not going with directly with that PPT or with that particular lectures, but I'll just give you the brief on that, like what actually we are going to discuss in the next lecture or in the next lab. I think tomorrow we have lab, okay, from 1 to 3, if I'm not wrong. So on that time, what actually I'm going to do, that we will start with some of the virtual lab exercise. We'll start with some of the semiconductor physics theory and all stuff, and we will start exploring that, like how the basic component get identified, how we can get the values of the resistor, capacitor, what is how to identify the behavior of the capacitor, which type of the capacitor are there, other transistor, and all type of the stuff that we are going to discuss. So right now, I want to know about that. Does this theory or this historical purview already covered in 8, 9, 10 standard or not? Like I have just done this, all this 8, 9, 10 standard before 15 years back. But I want to know you that still it is this syllabus is having such type of the historical purview. So somebody please now please open the mic and start discussing on that rather than writing in a chat box. So it's going to be a good for us. Yeah, so this all stuff is already covered in 9th and 10th standard. Okay. So I think yes, am I audible now? Hello? Oh, there are some of the background noises are there. Yes, so there was a chapter in 11th atomic structure. Okay. So it was in 11th standard also. Oh, it is good. So have you kind of heard about the stuff which is named as a graphene? There are some out of the track discussion, but we need to do something. Graphene. Have you heard about, anyone has heard about the name graphene? Have you heard about the graphite? Graphite, yes. So can anybody tell me what is the difference between graphite and diamond? Because this comparison already there, if I'm not wrong. Somebody please open their mic and tell me what is the difference between graphite and diamond? Atomic structure? Yes, Gaura, tell me. एटॉमिक स्ट्रक्चर उनका अलग अलग होता है. ओके, और क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या मेजॉरिटी चेंजेस होता है? मेजोरिटी चेंजेस तो मुझे अब याद नहीं है, 12th में आया था. ओके जालीदार रचना जैसा कुछ होता है, ऐसा. So Ravi has said, like, okay, you mute mic. Okay, Ravi has said diamond is a solid and graphite is liquid.
No man, your pencil is not liquid man. आपकी पेंसिल लिक्विड होती है, आपकी पेंसिल की जो लीड है वो ग्रेफाइट है, वो लिक्विड नहीं होती है, वो भी सॉलिड होती है. बोथ आर सॉलिड, बट कार्बन molecules in the both of these, yes. So difference of the carbon molecules, you can say, like in diamond and graphite is a one form of combination of carbon, different. Yes, Priya, you want to add something? So I want to saying that sir, diamond is the hardest and graphite is the soft materials. So Like how graphite it is is? soft and sir, Okay, right, if you right, say right. So yes, it yes. is because of the carbon structure. So because of the carbon structure is present in graphites, I think the structure of graphite is like say 12 carbon. I think Okay, 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 so okay. structures are different, sir. Like based on the carbons are added. Like Okay. Yeah, yeah, true, true. So that's the same answer. Like in a diamond, you have the different atomic structure of the carbon. Like it's a combination of carbon is a bond is created in such a manner that it will make this carbon bond more stronger. That's why the diamond it is not directly that much of the softer. While in a graphite, that's graphite having kind of this stuff which is having kind of the softly bounded layers are there, and that atomic structure is going to be in such a manner that it will make the entire structure very soft, but both are made up from the carbon atoms only. Okay, but I want to say over here, what is a discovery and why I'm asking this particular question? Because we all know about that the atomic structure. You just go to your 8, 9, 10 standard and you can get the atomic structure also for the graphite also and diamond also. So what the scientist of University of Manchester has done. Okay, scientist name is Andre Jain and K. Novoselov. Okay, what these two people has done, and those two people are not a small age. Okay, the two people are having an age of near about 35 to 40 years. So what these two people has done, he has identified that like graphite having the kind of the uh, closely bounded layer structure are there. So let me just show you over here. Graphite, and let me just search. Bing is not giving always kind of the good stuff, so I will always prefer with the Google. Graphite atomic structure. Hello. That we will see. Yes, please. Yes, बोलिए बोलिए. Sir, I think Yes, बोलिए in क्या doubt? diamond there are sp3 in sp3 bond there are 4 electrons in carbon, and in graphite Yeah, there are right, right. three electrons and one free electron in graphite sp3 bond. Okay. Yeah. So if you can just compare, so this is a stuff like that. If you can see in my screen, so diamond having a such type of the covalent bond are there, while graphite having a such type of the layered structure are there, but it is like a loosely bound. Okay, so whatever that bonding between these layers are there, which is loosely bound. Okay, so what this University of Manchester, this researcher has done, what they have done, they have just break the bond between this both the layers. उसने क्या किया, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया. एक्सपेरिमेंट वो भी सिंपल. क्या है सिंपल एक्सपेरिमेंट? उसने एक टेप ली, जो आप टेप लगाते हो ना, कोई भी सिंपल एडेसिव टेप, वो टेप पे उसने एक साइड पे ग्रेफाइट का पाउडर, जो हम पेंसिल का पाउडर बोलते हैं, उसको क्रश करके उसके ऊपर थोड़ा छिड़क दिया. बाद में क्या किया, बोथ ऑफ द टेप हैज जस्ट टच विथ बोथ ऑफ द एंड. वो दोनों टेप को दो साइड को टेप को उसने साथ में एक अटैच कर दिया और बाद में फिर से उसको ओपन किया. ड्यू टू दिस प्रोसेस हैज डन काइंड ऑफ द सेवरल टाइम. आप टेप में एक साइड पे पूरा ग्रेफाइट पाउडर लगाओ, उसको दूसरी साइड से अटैच कर दो और फिर से उसको एक स्टेप फिर से ओपन करो. जो भी एक साइड में, अभी आपको पता चलेगा कि दोनों साइड पे थोड़ा थोड़ा ग्रेफाइट का पाउडर चिपक जाएगा. अभी आप क्या करो, एक साइड का जो सैंपल था उसको जाने दो, दूसरा साइड का जो सैंपल है उसमें फिर से नई टेप लगाओ, फिर से उसको एक्सट्रैक्ट करो, और doing the same type repeating process, after some time you will get this single layer of this carbon structure. Only the single layer is going to be look like this one. Only single layer of this particular structure, which is named as a graphene. Okay, and that graphene
is kind of the strongest material, we can say. How it is in terms of the strongest material? Like इसको आप रोल करके इसका ट्यूब बनाओ तो बनता है कार्बन नैनो ट्यूब. Let me just write it over here, like graphene and electrodes. Yes, you can see like that. This is the graphene, okay? Yes, this is the graphene, only single layer. किससे बनता है? ग्रेफाइट के जो बीच के जो लेयर है, whatever this layer are there, okay? Open image in new tab. Yes, जो भी आप देख रहे हो यहाँ पे, same stuff. If you can see, आप इसके बीच के जो बॉन्ड है, whatever the bond over here, this is a red one. अब अगर आप उसको तोड़ देते हो किसी भी तरह से, कोई भी मटेरियल प्रॉपर्टी, कोई केमिकल रिएक्शन करके, तो it is become a 2D structure which is a graphite. और अगर उसको आप ऐसा रोल करते हो, which is make a carbon nanotube, तो ये कार्बन नैनोट्यूब के 3 थ्रेड्स है. आप ये कार्बन नैनोट्यूब के रोड बनाओ, और ऐसे 3 रोड, आप ऐसे 3 आई कैन से आप सिंपल आई कैन से सच टाइप ऑफ द रेज, जो भी आप धागा नहीं पिरोते हो, सच टाइप ऑफ द टाइनी थिन स्ट्रक्चर से आप पूरा पियानो उठा सकते हो. Okay, this is type of the strong material, strong property of this graphite material is there. And for this discovery, कि भाई ये ग्रेफाइट में से ग्रेफिन एक्सट्रैक्ट करने के लिए और फर्स्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए ये दोनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था. Like we know that graphite is there, carbon like this diamond is there, but how we can get the graphene out of that, which is a 2D structure. And now it is a very much popular in terms of flexible device, organic LED, or transparent device, transparent glass, solar cell, batteries are there. Lots of applications right now about the graphene, and lakhs of people are working on this particular domain about the graphene, their characteristic, their device. उससे बहुत सारी चीजें बन रही है. सोलर सेल बन रहे हैं, बैटरीज बन रही है. ग्राफीन से बनाई हुई बैटरी, जो भी आप अभी बोल रहे हो ना कि फास्ट चार्जिंग, ग्राफीन से बनाई हुई बैटरी इट्स चार्जिंग वेरी फास्ट. जो भी आप अब तक जो भी फास्ट चार्जिंग कैपेसिटी आप बोल रहे हो, उससे कहीं ज्यादा अमाउंट में फास्ट चार्जिंग होती है बाय यूजिंग दिस ग्राफीन बेस्ड बैटरीज. Samsung is working on that particular research. So this is a very much advantageous. There are very much kind of the open market right now about this atomic structure, graphene based atomic structure. So this is just for your kind of the knowledge. Like ये भी चीज है. Why I am sharing this? Because right now I am doing my PhD on this graphene based device. Okay, मैं polarizer बना रहा हूँ. Like आप लाइट कभी आपको पता चलेगा कि जब भी आप सन रेज, आप गोगल्स क्यों पहनते हो? क्या? क्योंकि कुछ लाइट है वो पोलराइज होके आपकी आंखों में ना आए और आपको एक ब्लैक जैसा पूरा एक विजुअल मिले, ताकि आपको दूर से देखने में आपको आंख को ज्यादा परेशानी. सो दैट्स योर ग्लास इज नथिंग बट द पोलराइज्ड ग्लास. सो आई एम वर्किंग ऑन द सेम डोमेन. लाइक वो ग्रेफिन को यूज करके ऐसे कैसे पोलराइज्ड ग्लास बना सकते हैं, लाइकवाइज सिस्टम. This is very interesting topic. Like whenever you have any thoughts going back on physics and material science, that's going to be help you a lot. Okay. Yes. Now, so that's 11:18. So what we can do? Anybody having yes, modern space record. Single layer of graphite is called as a graphene. Yes. Right. Arrangement of carbon is indifferent in both. Good one. Space rocket में. Like space rocket में मैंने in 2018, let me share you my experience. In 2018, I have traveled to US. मैं एक US में conference में गया था. At that time, I have meet with one scientist of NASA. वो जेट propulsion laboratory में ग्राफीन के ऊपर जो भी स्पेस रॉकेट है उसके अंदर का इंसुलेटर बना रहे हैं. So what the scientist has told me, like जो भी मटेरियल आप अभी तक यूज कर रहे हो, okay, उसको इंसुलेटिंग, लाइक जो भी हीट जनरेट हो रही है, वो हीट को सस्टेन करने के लिए आपको एक जाड़ा पूरा एक वेरी थिक लेयर आपको लगाना पड़ता था रॉकेट में, तब जाके वो पूरा इंसुलेटिंग के जैसा काम करता था. हीट उसमें सब कॉन्सेंट्रेटेड होती है, दूसरी जगह पे उसका इफेक्ट नहीं होता. बाय यूजिंग द ग्राफीन, दैट थिकनेस इज गोइंग टू बी रिड्यूस इन वेरी ड्रास्टिक इन मैनर. आप ऐसा एजम कर सकते हो लाइक 1 मिलीमीटर था
वो रिड्यूस होके 100 टाइम्स स्मॉलर हो गया है। तब सोचो जो भी आपका वेट है विच इज ऑल्सो गोइंग द वेरी लाइट वेट if you are using a graphene based insulator or graphene based heat protecting structure. So this is a stuff, yes, it is used in a modern space rocket to kind of the making insulator, to making antennas, and lots of applications are there. It's true. Yeah, so this is all stuff that we have discussed till now. Now you have 10 minutes of time. In 10 minutes of time, what you need to write, everybody need to write this stuff like what you have learned in this entire lecture. आपको क्या लिखना है as a conclusion? पूरे लेक्चर में आप क्या सीखे, आपको क्या पता चला, आपका लर्निंग क्या है पूरे लेक्चर में। आपके पास 10 मिनट का टाइम है, आप 10 से 12 लाइन में, ओके, यहाँ पे चैट बॉक्स में आपको लिखना है 10 से 12 लाइन में आपको लिखना है कि पूरे लेक्चर में आपने क्या पढ़ा और आपको क्या सीखने को मिला। एंड देन आफ्टर एट द एंड ऑफ दिस 10 लाइन आपको अपना एनरोलमेंट नंबर लिख के आप लीव कर सकते हो। सो नाउ 10 मिनट इज ओपन फॉर एनी क्वेश्चन। और ये समरी के लिए सब लोग समरी लिखेंगे और ये समरी और एनरोलमेंट नंबर के ऊपर से ही मैं सबको अटेंडेंस दूंगा, तो मुझे पता चले कि सब लोग सुन रहे थे, सब लोगों को पता चल रहा था कि भाई क्या चीजें यहाँ पे डिस्कस हो रही है। सो सब लोग स्टार्ट राइटिंग इन 10 लाइन व्हाट यू हैव लर्न इन दिस लेक्चर। ओके, सब लोग लिखिए 10 लाइन में अपना कंक्लूजन ये लेक्चर का, और उसके नीचे आपका एनरोलमेंट नंबर लिख दीजिए एंड देन यू कैन लीव एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। और ये 10 मिनट में किसी और को कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। योर टाइम इज ऑलरेडी स्टार्टेड, प्लीज। I have told you just write in a 10 line, okay? So don't write kind of the scattered line. Better you will just type in somewhere else. आप नोटपैड में टाइप करो या कोई मोबाइल की दूसरी एप्लीकेशन में टाइप करो, सिंपली व्हाट्सएप पे भी टाइप करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो, इट्स ओके। बट write entire 10 lines. Don't write in scattered, so I can get the idea like who has written the complete information. So this is a request, okay? आप ऐसे लिखो। It's okay, not an issue है, चलता है। यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसका कैनवास अभी तक सेटअप नहीं हुआ? सबका कैनवास सेटअप हो जाना चाहिए। हाँ, अगर आप नए हो, आपने ज्वाइन नहीं अभी ज्वाइन किया है, आपका कैनवास सेटअप नहीं हुआ है, तो मुझे बताइए। यस हर्ष, आपका कैनवास नहीं अभी तक सेटअप हुआ? ओके, नहीं नहीं, नो, नॉट सेटअप। तो आप लास्ट मैंने जो डेमो बताया था उसमें आपने नहीं वो सब चीजें किया था कि भाई कैसे, या आप अभी ज्वाइन हुए हो दिवाली के बाद? आप पहले क्या कीजिए, सब लोग ऐसा ये चीज सुनिए। आप पहले अपने लॉगिन आईडी जिससे आप अपना टाइम टेबल देख सकते हो, वो आपका लॉगिन आईडी है ना, मारवाड़ी। let me just give a quick demo over here so you can get the idea. आप पहले जो भी कैनवास का ये इश्यू के लिए आप पहले क्या कीजिए, हाँ वो मिल गया है, लाइक हर्ष कैन गेट। हाँ वो आपको एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड मिला होगा जो आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हो। यू कैन एक्सेस विथ login.marwadi.ac.in. So let me just go with that stuff. आप ये वेबसाइट में जाओगे login.marwaduniversity.ac.in। यहाँ पे आप अपना एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड डालिए, जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड है। जब भी आप एंटर करोगे तो एक स्क्रीन खुलेगी, वो स्क्रीन रेड कलर की स्क्रीन होगी, नोटिस बोर्ड जैसा। उसके एंड में आपको एक मारवाड़ी यूनिवर्सिटी का आईडी मिलेगा। लाइक देयर इज समथिंग लाइक, अगर आपका नाम विशाल सोरठिया है और आपका जीआर नंबर 695 है, तो आपका आईडी क्या होना चाहिए? योर आईडी विल बी लाइक it will be like vishal.sorathia695@marwadiuniversity.ac.in। ऐसा आपको एक मेल आईडी मिलेगा और नीचे पासवर्ड लिखा होगा। ये दोनों को लेके आपको कहाँ पे जाना है? आपको mail.google.com पे जाना है।
ठीक है। और वहां पे वो आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है, जैसे आप जीमेल में लॉगिन करते हो, ठीक है। उससे लॉगिन कीजिए और उसमें सर्च कीजिए कि कैनवास लिखा ऐसा कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, इट विल बी लाइक फ्रॉम कैनवास फॉर टीचर। ओके, उसमें अगर कुछ आपको इनविटेशन नहीं आया है, कोई कैनवास लिखा ऐसा कुछ नहीं है, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कीजिए नंबर पे और आपका मेल आईडी बताइए, तो मैं आपको कैनवास में ऐड कर दूंगा। सो ये चीज आज हो जानी चाहिए सबकी, ठीक है। दिस इज अ कंपल्सरी स्टफ हियर। सो व्हाट इज माय काइंड ऑफ द मोबाइल नंबर? माय मोबाइल नंबर इज 9033316057। अगर नहीं है तो ये मेल आईडी पे व्हाट्सएप पे आपका ये मारवाड़ी यूनिवर्सिटी का मेल आईडी भेजिए, मैं आपको ऐड कर देता हूँ। चलिए पहले ये सब चीजें कीजिए। ओके, अगर किसी का कैनवास सेटअप अब तक नहीं हुआ है तो पहले अपना लॉगिन आईडी यहाँ पे लॉगिन डॉट मारवाड़ यूनिवर्सिटी पे जाके अपना अकाउंट लॉगिन कीजिए। उस पे आपका आईडी लिखा होगा एक फर्स्ट पेज में ही, जो फर्स्ट पेज ब्लिंक करेगा उसके नीचे ही आईडी पासवर्ड होगा। वो आईडी पासवर्ड में जाके उसको लेके आप मेल से लॉगिन कीजिए। अगर उसमें आपको कैनवास का कुछ भी इनविटेशन नहीं है तो बाद में मेरे को वो मेल आईडी बताइए, तो मैं आपको ऐड कर दूंगा, तो आपको वो इनविटेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें सब लोग आज करना है, ठीक है। ये वीक में पहले सब लोग कैनवास सेटअप कर दीजिए, क्योंकि सब चीजें जो भी हमारा सबमिशन है सब वो कैनवास पे ही होगा। आप अपना मार्क भी उधर से ही देख सकते हो, पूरा रिजल्ट उधर देख सकते हो। सो इट इज कंपलसरी फॉर ऑल टू सेटअप। अगर आपने अभी कोई और डाउट है तो आप लिखिए, मुझे बताइए माइक ओपन करके। अदरवाइज नहीं है तो आप अपना एनरोलमेंट नंबर लिख के, अपना रिस्पॉन्स लिख के आप अभी लीव कर सकते हो। लेकिन मेक श्योर सबको रिस्पॉन्स लिखना है और उसके बाद आपको अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है क्विकली। यस बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर वो कैनवास में लॉगिन के बाद आपने जो नेम डिस्प्ले का एडिट करने को बोला था, वो सर हमारे में नहीं हो रहा है। आपका Yes, sir. क्या है? रुकिए एक मिनट, एक मिनट, रुकिए रुकिए। आपका आपका लैब भी है ना कल? आपका लैब भी है कल? हाँ, तो क्या करेंगे, जितने लोगों हम ये सब पूरा क्लास है ना, वो सबको एक एक को बुला के हम पहले कैनवास सेटअप कर देंगे। चलिए ऐसा करते हैं। तो जो भी कल आप हमारे लेक्चर में ये कैनवास, जिसका जो भी प्रॉब्लम है ना, वो उसका एक एक का स्क्रीन शेयर करके हम कर देंगे। सो वेट फॉर टुमारो। टुमारो आप लैब में आइएगा और लैब में आपका क्या इश्यू है वो एक एक को ओपन करके मैं कैनवास से सेटअप कर दूंगा। चलिए, कल हम पूरा डे ओके ये कैनवास सेटअप में और उसमें हम डेडिकेटेड करेंगे। चलिए, तो हो जाएगा, ओके। ठीक है। ओके हाँ हाँ। बट यू मेक श्योर सब लोग कल आना, ठीक है। तो जो भी इश्यू है सब कैनवास सेटअप हो जाएगा।
अगर आपने रिस्पॉन्स लिख दिया है, then you can leave and you join with the new lecture for new faculty. Okay, you can leave now if you have written your enrollment number and all stuff, please.